ओके तो कल हमने ये प्रोग्राम देखा था, इसके पहले हम एक आज देखते हैं पहले डीबगिंग, ठीक है। एंड आई होप यू गाइस विल ट्राई दिस प्रोग्राम. For example, what I am doing, I am creating one global variable, for example here, and top include, and I'm declaring one global variable. So global variable I can declare here, for example, data, and here global v underscore global type I value 10. I have assigned 10 value to it. Okay. So just I'm creating one variable. It will take some time because okay. Now what I am doing, I am changing the value of this variable here and there. So for example, I am changing the value here, v equals to 20, and then I am changing the value here, for example, v equals to 30. Again I am changing the value here, v equals to 40. Not v, sorry, v underscore global. Okay, and inside this also I'm changing v equals to global equals to 50, and here inside this display LV I'm making it v equals to 70, for example, global v, sorry. Okay, and here I'm assigning 80, for example. Okay, and I'm saving it. I have activated it, and here at the last, for example, display LV I'm commenting for now. And here I'm printing value of this. Okay, so this is very simple program we have written. Now I'm executing it. So I'm giving any material type and I'm executing it. So it is printing 80. Okay, so now we have to identify like why it is printing 80 and where this value is getting changed. Okay, so how can we debug this? So I will do /h and I will see why it is getting printed. Okay, so here we know, right, this right statement is getting printed, so it means the v underscore global, if I double click here, so this value is getting printed, but it is 10 as of now, right? And I have to check like when this value is getting changed in my program, because I cannot see here when it is getting changed as of now. And for example, this program is very big, so in this case what we best we can do, right? So what we can do, we will go here. It is compiling because I restarted my server.
Okay, and I will go to watch point here, and then I will click on this new or create watch point, and which variable I want to watch. So I want to watch this variable. Okay, and I want all module instances. I just click what we have here. Yes, so what I have done, I have put one watch point on this variable. Now what I will do, I simply do F8, and here this value is changed to 20. So this automatically, you can see this watch point has been reached. So I can understand, okay, here the value is getting changed, but I want to understand why it is 80, right? So what I will do, I will again do F8, and here it has automatically stopped, and here it changed to 30. So we can understand, okay, this value is getting changed to 30, but I want to understand 80. Again I will do, and now it has changed to 40. Again it has stopped to 50, and now we can understand, okay, so here it is assigned to 80, right? And now we can do F8. So this is how we can understand, okay, where this value is getting assigned. But for example, let me execute it again. I have to do /h, and I'm skipping this as of now, skipping this. I'm coming here. Okay, I'm going back, coming here. Okay, now for example, I want to change the value of this parameter for something else, or for example, I want to make it 50. So I can come here, and when I click here and I want to make it, for example, 20 or 30, 40, 50, anything, 20, I can change it at runtime. So the value will be v global now, not 40, and it will again change that value. For example, it will come here and it will come here, right? And now what I want, I do not want to execute this statement, this select, right? So I do not want to select anything into it underscore mara for, sorry, it underscore marcy for any reason. I do not want to select this. So how can I skip this? So I can just click here, and I can do right click. uh, so if I do F5, F6, F7, F8, what it will do, it will execute it and go there. For example, I can put breakpoint here, and if I do F8, it will execute this and come here, but I do not want to execute this. I want to skip this particular logic because of some reason. So what I can do, I can use this go to statement after right click, and when we click here, you can see it has not executed this particular query. So with the go to, I can do that. So for example, let's do not select this and restart this, do /h again. Okay, and here for example, I'm coming directly here, preparing out tab. Let's do F8, and if I go inside, okay, so both the table is having the value, it will come here. See, in first time, actually it is having this Matner. Okay, if you see this Matner, so the Matner is, oh sorry, I have cleared that, my bad. Okay, let's execute again. So I want to show you one scenario. Okay, now directly F8. It has not stopped to breakpoint. Okay, I want to go inside this.
Let's do F8. Okay, I'm going inside this. And now, for example, okay, see one thing. Here I am doing F5, again F5. So in WA Mara Matner, the value is 23, right? And if you see in Marcy, like this 23 is not available. So it is not having this 23 material. How I know? Because if I do F5 or F6, it will directly come here. It will not get inside the loop. So for example, if I do F5, see it has come here. It has not went inside, right? So it means this material is not there. But if I want to go again here, let's try. And if I try to come here, so see, if I try to come here, it will say it is not possible to jump this line because we cannot jump inside any loop which is not executed. Okay, so this is the limitation. But if I want to come here in this line, for example, so I again want to execute this, so I will go to statement here. Sorry, it is not. Okay, let me come out this. Okay, I have to come out to loop actually. Let me put the breakpoint here. Okay. Hmm. Okay, so for example, now I have come here and again I want to go back into this if condition. So what I will do, so I will, so earlier we were inside this loop, that's why it was not allowing. But I can come here again. For example, I have come here. And now if I want to change any value into this IT Mara, for example, so or in IT Marcy, right? So I can click here, I can go here. And here I can insert a row. For example, I want to insert a row for a particular. Okay, so here you can see insert a row is there. And we can insert a row or append a row. So if I want to insert in first, so at first I have inserted. Okay, and now I can change this material number to, for example, it was what, 23, right? uh, I think 23, and I can make it 1000, for example. I can save it. And now if I again come this under this, so what we are doing actually, we are trying to update the value at runtime in the table level, and then we are checking whether we can like print that material at the output or not. So the material number is not okay, 00. Oh, it was 00, so it will not match. So let me edit this again. So for example, I can go inside this, and for this I can double click and I can edit this material to this. So now it will print this material. So if you see, now it is come inside for this material. Earlier it was going directly here, right? It was not going inside. So likewise we can achieve the things and we can make use of our. So this is the one thing. Now the other thing, for example, I want to update. अभिषेक 1 मिनट, आपने ये कैसे MARC टेबल में इंसर्ट किया, एक बार आप वो दिखाओगे क्या? So we can go here the table label, for example, here, and here we can insert the row, we can append the row, we can insert a row, we can delete the row, we can change the row. So we can do these things. Okay. Okay, so this we can do, and this is very important. Like when you work on real time and if you want to test
for some test data which you do not have in your query or in your output, you can put directly that data here and then you can try, like for this data how your program will work. And watch point is simply, it will say like when you want to stop. So if अगर आपको check करना है कि IT मारा में value कहाँ से आ रही है, right? When IT मारा table is getting populated or when IT output table is getting populated, क्योंकि program अभी छोटा है तो हम easily identify कर सकते हैं, लेकिन sometimes it is very big. We can put the watch point directly and then we can see. So and also go to statement, अगर हमें कुछ skip करना है, अगर कोई particular logic we do not want to run or we want to retest, for example let me do F7. अब मुझे देखना है, अभी मैं यहाँ तक आ गया लेकिन मुझे देखना था फिर से कि इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, तो again I can jump to here and there, but jumping between the like events, is it possible? For example, see, you cannot jump once you are inside another event, you cannot jump to the previous event, but you can jump here inside this. So for example, if I want to go here, new window open for, sorry I clicked on wrong button. So see, within event we can jump, so again I can execute this logic. So फॉर एग्जाम्पल क्या होता है समटाइम्स कि हम लोग यहाँ ये पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट करके चले गए लेकिन हमें फिर से एग्जीक्यूट करना है उस लॉजिक को, तो वी कैन जंप बैक टू दैट लॉजिक। ऑल्सो अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन है, वी कैन डिलीट दिस टेबल, वी कैन चेंज दिस कंडीशन। अगर ये अंदर नहीं जा रहा है समहाउ, समटाइम्स क्या होता है कि वो चेक करता है साइज वर्सी 0 तभी अंदर जाना है, लेकिन हमारा साइज वर्सी 4 आ जाता है, तो वी कैन चेंज दिस साइज वर्सी वैल्यू टू 0 जिससे वो अंदर चला जाए वो, है ना। तो दीज मॉडिफिकेशन वी कैन डन as and when we required. Okay, let me check whether how much time. Okay, अभिषेक, yeah, आपने वॉच पॉइंट कैसे क्रिएट किया, वो जरा फिर से yes, बताओ। yeah, we will see. So here one more thing we can see, so let me tell you one more thing. For example, यहाँ पे you can see site avix 1 है, and when I go inside this, for example, let me put breakpoint जिसके लिए multiple entry रहेगी। For example ये 2 हो गया है, 3 हो गया है, ठीक है। तो for which material it is 737, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव 737 material in Marcy here, right, in third position, that's why it is 3। अब अगर ये लूप चलेगा फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करता है जनरली, ये बता रहा है कि हम कौन से नंबर रो पे हैं, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, जैसे अभी थर्ड रो पे है, थर्ड बताएगा। अभी मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करूंगा इस लूप को, फॉर एग्जांपल। अब देखो मैं आउटर लूप में चला गया हूं, right, what it is saying 9650। so if you come here in IT Mara, what is the material number, why it is giving this much, 737, I think something is wrong with this, it should be 3 in IT Mara। and what about Marcy, 737 is there, और कहीं भी है क्या, so 9650, let's check। I don't think it is there, it is sorted already। oh 9650, sorry, it is having not that much entry, so something went like wrong here, I don't know why it is showing 9650, but this site avix is showing the current index of the execution, okay, but here it is showing some different value, I don't know। see, it is 3 now, and when go again, so it is 4, so now it is executing the fourth line। so if you see this 1017, it IT Mara fourth line hai, 1017, and when it go inside this loop, for example, so for, okay, so in this loop also this is the fourth line,
अगर आप देखोगे इन मार्सी ऑल्सो, बट अगर आप देखोगे या सो हम डायरेक्टली 11 लाइन पे जाते हैं, इट इज डिफरेंट. सो फॉर एग्जांपल सी, अब यहाँ पे 11 लाइन है आईटी मार्सी के लिए. अब आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस अगेन एंड अगेन. तो अब ये 12 लाइन है ना. अब अगर मैं मान लो यहाँ पे बाहर आता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर मटेरियल जितना भी मटेरियल नंबर है 100 110 सारी मार्सी की लाइन प्रोसीड करेगा. व्हेन आई डू F8, तो ये देखो अगेन ये 11 इंडेक्स हो गया. तो अब ये किसका इंडेक्स दिखा रहा है, बाहर वाले टेबल का. तो मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि दिस साइट टेबिक्स विल ऑलवेज शो द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ द, और करंट जैसे भी इसका स्कोप क्या है इस वाले क्लियर का, आउटर लूप का स्कोप है, राइट. तो ये साइट टेबिक्स किसका दिखाएगा, आउटर लूप का वैल्यू दिखाएगा. अगर ये इनर लूप का होता तो ये इनर लूप का दिखा रहा था. अब इनर लूप का इंडेक्स अगर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो इट विल बी चेंज्ड. तो अगर मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो अभी देखो ये 12वीं लाइन पे आया, लेकिन जब मैं इनसाइड इनर लूप में जाऊंगा तो इनर के लिए 16वीं लाइन है. जो भी ये मटेरियल नंबर है इट इज देयर इन द 16th लाइन. अगर हम जाएंगे मार्सी में तो वी कैन सी कि ये 16 लाइन का मटेरियल से भी प्रोसेस कर रहा है. तो ये नंबर चेंज होते रहेगा. और अगर मुझे चाहिए कि मुझे डायरेक्ट देखना है भाई, अब मैं देख रहा हूँ टेस्ट डेटा, मुझे अभी डीबग मेरा जो डेटा है वो कहीं तो मुझे एरर आ रही है फॉर एग्जांपल, एंड आई डायरेक्टली वांट टू जंप समवेयर, वेयर आई वांट टू जंप. फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि जब भी मुझे 1282 लाइन पे जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि जब भी 1282 लाइन आए तब ये जाके स्टॉप हो. तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगेन आई विल गो टू वॉच पॉइंट. ओके, ये दिस विल शो अवर ब्रेक पॉइंट एंड हियर आई कैन क्रिएट अ वॉच पॉइंट. तो किस वेरिएबल पे क्या करना है मुझे, साइट एबिक्स, राइट. साइट एबिक्स आई कॉपीड. ओके, एंड मुझे क्या करना है, I want site AVIX equals to, for example, 1250. For example, when it reaches to 1250, then I have to stop. And let's do F8. See, it has reached to 1250. And now वो सारा उसने एग्जीक्यूशन किया है और पूरा प्रोसेस किया है. अगर अब मैं टी वाई फाइनल देखूंगा, टी आई टी आउटपुट, तो इतने रिकॉर्ड ऑलरेडी उसने डाल दिया है टी वाई आउटपुट में. ठीक है, ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड डालने के बाद वो यहाँ पे रुका है जो कि इसका इंडेक्स है. और अगर मैं वो मटेरियल नंबर देखूंगा तो अभी इस मटेरियल के लिए वो रुक गया है. तो ऐसे हम वॉच पॉइंट का यूज कर सकते हैं. एक तो हम कर सकते हैं कि कब वैल्यू चेंज हो रही है. दूसरा हम कर सकते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर लूप में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रुकना है, जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो है कि मुझे जो डीबगिंग करना है मुझे इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए करना है, लेकिन वो मटेरियल 1000 नंबर पे. तो अभी 1000 बार हम एफिट करेंगे, उससे अच्छा है कि वी कैन डायरेक्टली क्रिएट द वॉच पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वॉच पॉइंट. तो वॉच पॉइंट डायरेक्टली एंड वॉच पॉइंट विद कंडीशन. अगर मैं वहां पे कुछ नहीं डालता कंडीशन, तो एवरी टाइम जब भी साइड टेब की वैल्यू चेंज होती, वो एवरी टाइम रुकता वहां. लेकिन वो तो फिर सेम चीज हो जाती, राइट. तो हमें अगर एक पर्टिकुलर उसमें रीच करना है तो आई कैन पुट दैट ब्रेक पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मुझे अभी क्या देखना है कि जब भी मेरी वी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 80 हो रही है तभी रुकना है मुझे, ठीक है. अभिषेक को वेरिएबल में मैं मैटनर इक्वल टू सो एंड सो मैटनर वो भी डाल सकता हूँ वो क्या? भी डाल सकते हो, राइट. अगर तुम्हें देखना है कि इस मैटनर को ही तुम्हें ट्रैक करना है कि जब भी इसमें मैटनर आएगा तो ही रुकना है तुम्हें, इसकी मैटनर की वैल्यू ये अच्छा, रहेगी तभी रुकना है, तो यू कैन पुट दैट ऑल्सो कंडीशन. ओके. तो जब भी इसमें मैटनर ये वाला आएगा तो वो रुक जाएगा, एंड देन यू कैन डीबग, देन यू कैन यूज गो टू एंड ऑल, एंड देन यू कैन डीबग. ठीक है. है ना. तो ये मतलब सिंपल है वॉच पॉइंट. अभी हमने 4 बटन देखे थे, F5 F6 F7 F8. अभी हमें क्या वॉच पॉइंट देखना है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गो टू, जो कि सॉरी यहाँ पर होगा, वेयर इज गो टू ऑप्शन, हाँ यहाँ पे गो टू. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमने सब देखा है. कंटिन्यू टू कर्सर इज व्हाट आई हैव नोटिस टुडे, आई थिंक.
एनीवे अगर हमें ऐसे डायरेक्ट देखना, जैसे हमने बात करी कि हमें देखना है कि भाई इसकी वैल्यू 50 कहीं सेट हो रही है क्या, है ना, तो कहाँ 50 या 40 कहीं सेट हो रही है, तो वी कैन डायरेक्टली क्रिएट अ वॉच पॉइंट ऑफ v अंडरस्कोर ग्लोबल एंड वी कैन पुट द कंडीशन कि कहाँ पे 40 सेट हो रही है, तो कहाँ पे रुकना है, v अंडरस्कोर ग्लोबल इक्वल्स टू 40. Okay, and do f8. So you can see it has reached here. Okay, so this is how we can use watch point and these things, and then we can debug. So अभी इसमें कोई डाउट है क्या watch point and go to में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द रन टाइम वैल्यू चेंज, ये तीन चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि रन इंटरनल Abhishek, टेबल. yeah, if we have executed any one of the statement and we want to we have to go back to that statement. Can we go once executed? Yes, yes. So for example, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनसाइड आता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसमें वैल्यू असाइन करी, इसके अंदर गया, ठीक है, सेलेक्ट किया, अभी मुझे क्या करना है, मैसेज दिखाना है बाहर, है ना, या फिर मुझे फिर से सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, या मुझे पी मार्ट की वैल्यू चेंज करके फिर एग्जीक्यूट करना है. जैसे भी मैंने ये तो देख लिया कि इसमें तो साइज वर्सी 0 आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू कर दूंगा 1, एंटर करूंगा, और फिर से मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट क्वेरी रन करूंगा, तो मैं राइट क्लिक करके गो टू स्टेटमेंट करूंगा, तो ये फिर से यहाँ पे आ गया, एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट दिस अगेन, नाउ साइज वर्सी कम 4, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू क्या है, ROH1, अब ये एरर दे देगा. तो likewise we can change the value and we can execute again and again. Also we can skip, अगर मुझे अब ये नहीं execute करना है, skip करना है, I can skip this code and it will directly come here and it will execute with this value. So if we have to skip that if and if, so then we have to go to statement on end form, right? Yes, yeah, we Or can do. and if. So whatever, like if we can Okay. come here directly, go to statement. So this is not executable, so it should be executable. So only we can move to executable statement. So we can come here Okay. and form. So that means if we are going on any statement, we are skipping that code, right? In between Yes, that. yeah, it is not executing. If I put the Okay. breakpoint and do F8, then it will execute this and then come here. But this continue will not execute anything. It will directly come here. This go to statement. Okay. And a watch point, we can set it on a variable, work area, internal Table, table, yes, anything, right? anything. Okay. So anything we can put, and if that reached, then it will stop. Okay. Even it will consider include also, means. Yeah, everything. So it is considering include only, right? So b underscore global equals to 20 is inside the include. Include is nothing, but it is a part of the program only. Yeah, means v global understand means example v global is something coming from another include which was defined in another means in the initial stage. Okay. So it's And see, if it is global, so it is, so I understand what we want to say. So for example, there is one local variable. Okay. So for example, we have let's declare one local variable here. So data lv underscore, this is what we are selling, right? Lv underscore text equals to hello, no sorry, type char 5 for example, and here we have declared local variable and lv text equals to local. I have put some text inside this. Okay, now let's activate this, and I want to check where this lv text is getting changed, right? Because this is local, and if I try to put watch point now, for example,